मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर लोगों का पहनावा, संस्कृति और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। और मैं उस भारत देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड के भूगोल का समझ आया था। I am Indian, just Indian. I am not North Indian or South Indian. There are 1.4 billion of us. Do we still need a cardinal direction to define ourselves? I don't think so. It's not our fault that Christopher Columbus got lost and termed that he found India. भारत तो अनादिकाल से था, है और हमेशा रहेगा. We are thinkers. We are great at math because we invented numbers, and we are pretty good at letters too. India is the world's 5th largest economy and the wealthiest ethnic group in the wealthiest country of the world, that is the US. We never invade anyone because we already have everything: chess, the ruler, the button, wireless communication, steel, arranged marriages, and most important of all, we are the Janani of Loktantra. Where the world prays, we meditate. We practically invented religious tolerance, and we gave you non-violence and pundits and gurus and karma and dharma and reincarnation and kismet and many more. This motherland is magical and mystical, and no matter who you are, you can always find yourself here in incredible India. Dear fellow citizens, today as we salute our vibrant Tiranga, we pay our obeisances to all those whose lives have been caused in shaping this sacred land. Independence is our call to action, to blaze trails, ignite dreams, and build a future wherein the sky is also not the limit. Let's know that this celebration is not just a moment of a few hours, but a lifetime of gratitude and relentless effort. Be patriots like Subhash Chandra Bose, serve with dedication like Lal Bahadur Shastri, and contribute with vision like Ratan Tata. From "Tum mujhe khoon do, main tumhe aazadi dunga" to "At the stroke of this midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." This is the story of भारत. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है. भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. उन्होंने ही लिखा है कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है. हम जिएंगे तो इस भारत देश के लिए और मरेंगे तो इस भारत देश के लिए. जय हिंद, जय भारत.